Hello everyone. In this video we'll see how to find step response of LTI system. Now to find step response of LTI system, let's assume that we have a schematic view of LTI system. Let this is our LTI system with input as x of t and इसका जो response होता it will be y of t जिसको हम output response भी कहते हैं. Now if I assume that the input signal is nothing but unit step signal यानी कि x of t is equal to क्या है u of t. So whatever response we will getting is called step response as s of t. So from that case we can write if input x of t is equal to u of t, then output y of t becomes step response as s of t. So this is how you can fetch the step response, जिसको हम लिख भी सकते हैं. Step response is nothing but it is the response of unit step signal. So this will be the broader definition of our step response. Now to find its expression, output expression of step response, so we can write, as you know that y of t is equal to होता है x of t convolved with h of t. This is the standard form of representing convolution integral. Now if I replace x of t with u of t, we'll be getting u of t convolved with h of t. So if the input is replaced with u of t, output becomes step response. So this will be the expression as h of t is equal to u of t convolved with h of t. Okay. अब हम अप्लाई करेंगे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का फॉर्मूला. सो आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फॉर्मूला वी हैव some integration tau minus 2 plus infinity first function as it is, that I will take h of tau into u of t minus 2 into t2. Now you can write this using commutative property. इसकी वैल्यू u of t minus tau. ओके, सो ऑलरेडी हमने इसके बारे में देखा भी था. u of t minus tau का वैल्यू जो है वो 1 होता है बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू t के बीच में. सो डायरेक्टली आई कैन राइट, or we will sketch it here for our understanding purpose. First u of tau will sketch. From 0 to plus tau, value is 1. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है u ऑफ माइनस tau, तो इसको टाइम रिवर्स करेंगे. सो नाउ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में इसका एम्पलीट्यूड 1 है. दिस इज u ऑफ माइनस tau एंड विल शिफ्ट इट बाई टी यूनिट्स, यानी कि प्लस टी यहाँ पर ऐड करेंगे. तो अगर हम प्लस टी ऐड करेंगे सो 0 प्लस प्लस टी विल बी प्लस टी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस टी, इट्स एम्पलीट्यूड इज 1. तो ये हो जाएगा हमारा u ऑफ टी माइनस टू. तो इसके भी यहाँ पे हम लिखेंगे s ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t. This function value is 1, so we're left with h of tau into t2, and this is called the step response of LTI system. This will be its formula. अब ये तो हो गया in case of continuous time LTI system. If you write it for discrete time LTI system, we can write step response of discrete time LTI system. So we'll get, instead of s of t we can have s of n is equal to, instead of integration we can have summation from minus infinity to n. This will be h of k. How we'll write this formula? So this will be the formula for discrete time LTI system, और ये आ जाएगा continuous time LTI system. Now let's see the examples on finding the step response. Now let us see examples on finding the step response. So the first question is h of t दिया है t into u of t. So let's write the formula.
s of t will be integral minus infinity t h of tau इंटू डी टू होता है। तो आप हम वैल्यू पुट करेंगे t इंटू यू ऑफ टी, सो दिस विल बी टाउ इंटू यू ऑफ टाउ इंटू डी टू। अब यू ऑफ टाउ दिया है यानी कि लिमिट चेंज हो जाएगा फ्रॉम ज़ीरो टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी प्लस वैल्यूज। तो ये लिमिट आ जाएगा फ्रॉम ज़ीरो टू टी टाउ इंटू वन इंटू टी टू। एज यू नो यू ऑफ टाउ का वैल्यू है 1 फॉर टाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अदरवाइज ये 0 होता है यानी कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 हो जाएगा। So based on that this integral will be tau into d2। अब tau का इंटीग्रल अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा tau square by 2 with the limit 0 to t। So when I put upper limit as t, we'll get the answer as t square by 2। So this will be a step response for the given function। Okay, let us see one more example on finding the step response। So we have the second question as h of t is equal to, if I take del of t minus del of t minus 1, and these all questions are asked in either of the university examinations। So for that case, instead of directly going for the convolution integral formula, we know that s of t is equal to होता है h of t convolved with u of t, या फिर u of t convolved with h of t भी होता है। क्लियर। अब अगर हम h of t की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये है del of t minus del of t minus 1, it is convolved with u of t। तो अगर आप u of t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा del of t convolved with u of t minus del of t minus 1 convolved with u of t। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कन्वोल्यूशन विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स। फाइन। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी देखी थी, एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्ड विथ इम्पल्स फंक्शन इज इक्वल टू होता है इनपुट सिग्नल यानी कि एक्स ऑफ टी। तो इसके बिहाफ पे अगर हम देखेंगे सो डेल ऑफ टी कॉन्वोल्ड विथ यू ऑफ टी हम लिख सकते हैं यू ऑफ टी माइनस डेल ऑफ टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी। तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्ड विथ डेल ऑफ टी माइनस 1 विल बी एक्स ऑफ टी माइनस 1 होता है, यानी कि शिफ्टेड वर्जन ऑफ इम्पल्स फंक्शन के साथ अगर हम कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं तो इनपुट सिग्नल भी शिफ्ट हो जाएगा सेम यूनिट से। तो यहाँ पर 1 यूनिट से शिफ्ट हुआ है तो ये भी 1 यूनिट से शिफ्ट यू ऑफ टी माइनस 1। सो द फाइनल आंसर विल गेट u of t minus u of t minus 1। So this will be answer of our second question। Okay, so I hope you are getting how to find step response of the LTI systems। Okay, so in the next video we'll see another examples on step response। Thank you।